Hello, girls. Good morning. And today we discuss about the financing in public sector undertakings. Public sector undertakings play a dominant role at present. These undertakings includes departmental enterprises, financial institutions, and non-departmental enterprises or government companies. यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्रेजेंट करंट टाइम में जो है बहुत ही डोमिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सारे नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आते हैं और गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आती हैं. देयर हैज बीन appreciable growth in investment in public sector enterprises over the years. In 1951, in 1951, there were only 5 public sector enterprises with an investment of rupees 29 crore. यानी 1991 में केवल 5 जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी और जिसमें की इन्वेस्टमेंट था रुपीज 29 करोड़ and which has increased to rupees 2,74,112 crores in 242 enterprises as on March 31st 2001. यानी 31 मार्च 2001 तक जो है इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ करके हो गया 2,74,112 करोड़ और इंटरप्राइजेस की संख्या जो है नंबर जो है बढ़ करके 5 से हो गया 242 इंटरप्राइजेस हो गए 31 मार्च 2001 तक. According to the Public Enterprise Survey 2001-2, there were 230 working PSEs with total investment of rupees 3,24,532 crores. एक पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे 2001 और 2 के अनुसार जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनकी संख्या, उनका नंबर बढ़ करके जो 230 और जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 3,24,532 करोड़. The contribution of PSEs during 2000-2001, there was 230 working PSEs with total investment of rupees 3,24,632 crores. The contribution of PSEs during 2000-2001 in country's total production of legitimate was 100%, in coal about 97%, in petroleum about 81%, and in non-ferrous metals, primary lead and zinc about 80%. The internal resources generated by PSEs during 2000-2001 were rupees 37,802 crores. PSEs have also been making substantial contributions to the augment the resource of central government through payment of dividend, interest, corporate taxes, excise duties, etc., thereby helping in mobilization of funds to meet financing needs for the planned development of countries during 2000-2001.
Contributions to the central exchequer by the PSEs through these resources amounted to rupees 60,978 crores, etc. This is the scenario of the financing in public sector undertakings since 1951 to 2001. Okay, girls.